बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी बायोलॉजी में ये जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम लोगों को जो पॉइंट है, अभी जो चीज स्टडी किया उसको डायग्राम के रूप में देखना है। तो यू सी दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए। और इस डीएनए से पहले देयर इज ए न्यूक्लियस, है ना, सेल, फर्स्ट इज सेल एंड सेकेंड इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में तीसरा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में जीन, जीन में ये दिस वन इज एडेनिन, guanine, cytosine or thymine. These are 4 bases and these bases are connecting and they are forming the DNA. तो जो ये टर्मिनोलॉजी है जिसका डायग्राम आपके सामने है, और इस डायग्राम के आधार पर यू सी देयर आर क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स का 1 2 3 4 5 करते करते कितने 22 pairs of the chromosomes, और this one is X and Y which determine this X. तो इस तरह से हम फॉर्मेशन लेते हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्रोमोसोम्स के जीन, और जीन का ये बाइनरी, जीन का ये बाइनरी पॉपुलेशन 1101101। तो कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो उससे हमें एक पॉपुलेशन क्रिएट करना होता है, और तब पॉपुलेशन क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन, आज का जो लेक्चर होगा वो इसी के ऊपर बेस्ड है, how to create the population so that we can use in the analysis and solving the problems. So this one is the basic thing, and from this basic we have to study about how to prepare the population. How to prepare the population for GA, है ना। GA के लिए, जेनेटिक एल्गोरिथम प्रोसेसिंग के लिए पॉपुलेशन कैसे हम क्रिएट करेंगे, वो आज का ये लेक्चर है। तो उसके लिए आपने देखा कि 01 का कोड चाहिए, एंड दिस इज नोन एज ए बाइनरी वेक्टर। उस बाइनरी वेक्टर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। A chromosome is chosen to represent the real value of X, है ना। जो बाइनरी वेक्टर है उसको कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए एक क्रोमोसोम चाहिए। ये बाइनरी वेक्टर, दिस represent is there. Now it is required for the analysis.
एनालिसिस मतलब the precision of the result. जो भी रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए सपोज हम एक लेंथ लेते हैं, लेंथ ऑफ रेंज इज 3। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में, जिसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम इस तरह से कह सकते हैं कि सपोज दिस इज 0, here it is 1 and this is 2 and here it is -1, माने प्लस माइनस लेकर के। तो what will be the range? Range is 2 minus of -1, it is 3. Range is 3. So this kind of range is। अब दूसरा, पहला चीज हो गया रेंज, दूसरा है प्रिसीजन। Precision requires the whole range to be divided, into a small size. Whole range is divided into small size. अब small size में कितना बड़ा small size होगा? So if you take precision, P is of the order of 10 to the power -6. That is micro order का प्रिसीजन आप चाह रहे हैं। तो कितना प्रॉब्लम क्या है कि बाइनरी नंबर या इसको डेवलप करने के लिए बाइनरी वेक्टर जो होगा वो कितना होना चाहिए? व्हाट विल बी दी बाइनरी वेक्टर? इसके लिए जो प्रोसेस है कि द वैल्यू ऑफ द वेक्टर कैन बी calculated as कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू सी, फॉर्मूला ये है कि x max minus x minimum whole thing divided by precision. Whole thing is divided by precision. तो जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वो एग्जाम्पल ये है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दिस इज द मैक्स वैल्यू एंड दिस इज योर मीन वैल्यू। तो मैक्सिमम है 2 minus -1 and precision is 10 to the power -6, 10 to the power -6। तो वैल्यू क्या होगा? 3 into 10 to the power, this value is 3 into 10 to the power 6। This value is 10 to the power 6। ये वैल्यू आपका हो गया। अब ये वैल्यू जो 2 into 10 to the power 6 है, इसकी बाइनरी वैल्यू कितनी होगी? दिस इज 3, ये दिस वन इज द बाइनरी वैल्यू। अब जो ये x वैल्यू हो रहा है,
इसके लिए ये प्रिसीजन के आधार पर, मैंने कहा कि कितना प्रिसीजन में ये आपका कैलकुलेशन चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मुलेशन हो गया। अब बाइनरी वैल्यू कितना चाहिए, मीन्स कितना वेक्टर बनाएंगे, उसमें कितना बीट्स होना चाहिए, नंबर ऑफ बीट्स, इसको करने के लिए सो x इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 6 ये वैल्यू चाहिए। अब हमें देखना है कि ये वैल्यू बाइनरी में कैसे आता है, बाइनरी वेक्टर में कैसे बनेगा। तो बाइनरी वेक्टर में वी नो दैट 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 is 1024, 2 के पावर 10 is 1024। ये होता है, जैसे 2 है, फिर 2 का पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 6 है, तो दिस इज 2, दिस इज योर 4 एंड दिस इज 4 and 4 16 है ना, और 16 and 4 64 and then you have increasing, this one is, तो इसको आप बढ़ाएंगे, जैसे 2 के पावर 7 करें तो 128, 2 के पावर 8 करें तो 256, 2 के पावर 9 करें तो दिस इज 516, सॉरी 12, 512, और 2 के पास 10 करें तो दिस इज 1024। तो ये एक आपका वे ऑफ कैलकुलेशन है। अब 2 के पावर 20 है तो दिस इज 2 के पावर 10 into 2 के पावर 10, that is 1024 into 1024, 2 के पावर 20, and this value is it is 2 to the power 20 is equal to 1048,576, and now 2 के पावर 21 हमको कितना चाहिए, 30 lakhs 3,000,000। अभी कितना हमें आया है, अभी आया 1048,576। यदि 2 to the power 21 है तो 2 into 10 to the power 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1048,576। So this value is 2097152. This is 2 के power 21, and 2 के power next is 22. 2 के power 22 means again you are multiplying 2 by the above number, that is 2 into 10 to the power 2 के power 21. So 2 into 2097152. So this value is, you say this is 4, this is 10, this is 3, this is 4, this is 9, 1, 4, 914. This is 2 to the power 22. So this value x is equal to 3 into 10 to the power 6. This value is 4.19 into 10 to the power 6. And this value is 2.09 into 10 to the power 6. So what we find, this 3 into 10 to the power 6
is less than 4.19 into 10 to the power 6, and this value is greater than 2.1 into 10 to the power 6. So from this value, what we find, this is 2 into 10, 2 to the power 21 is less than 3 into 10 to the power 6 is less than 2 to the power 22. So the number of bits used for this discussion is n, and this n is this n is less than 22 and greater than 21. This n is less than 2 raised to the power n, and this n is in between 21 and 22. So we can also express this one is 3 into 10 to the power 6. 3 into 10 to the power 6 is 2 raised to the power n, and this is 2 raised to the power n minus 1. This is 2 raised to the power n minus n. This is the range. Therefore, the required bit is 22. Required bit is 22. So first thing that we have decided, that the number of bit is 22. And from the 22, we can generate a random population. A random population of 22 bits as this is 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1. This is 1 1 1. This is 1 0 1 0 0 0 1 1 1. This is random. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So this is the random vector that required. For the analysis of a problem, of the precision 10 to the power minus 6. It means if we increase the precision, then there is increase in number of bits. Now one interesting case is, suppose we want to create a population for coronavirus, that is COVID-19. So for COVID-19,
what is the size? Size is nano order. Nano order means 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 9. And this nano order, that is 10 to the power 9 minus 9, can be given the diameter size is 50 nanometer. 50 nanometer. So if you go through the 50 nanometer, this range, here to this point, here to this point. This is the virus. This is the virus. So this range is 50. This range is 50. So one is minimum, other is maximum. So the X population beat is the value something like max minus minimum upon precision. So this max minus minimum is 50 and precision is 10 to the power minus 9. So this is 50 into 10 to the power minus 9. Minus is plus 9. So this is 5 into 10 to the power 10. 5 into 10 to the power 10 X range. So we find that here, in this case, the value was X is 3 into 10 to the power 6. So for 3 into 10 to the power 6, we have N is 22 bit. N is 22 bit. This is. So what will be the bits of this? 5 into 10 to the power 10. 5 into 10 to the power 10. So 5 into 10 to the power 10, if you want, then what we have, it is just 5 into 3 multiply. 5 into 3 multiply. So this will be the value, that is here it is N is 22. So 2 raised to the power 22 correspond 10 to the power 6. 10 to the power 6. Another 2 raised to the power 32. If you go 2 raised to the power 32, 10, then it is 10 to the power 6 into 10 to the power 3. That is 10 to the power 9. That is 10 to the power 9. So for this 10 to the power 9, the number of bits N required is 33. N required is 33. So for analysis of coronavirus, the number of population bits required 33. 33 is required. So 10 to the power, this is micro. Here is the decision for micro. And this decision is for nano. This is nano. So this is nano order discussion. And here it is the micro order discussion. So if you find the value X in terms of decimal system, so what we find, this is 2 into 10 to the power 11, 17, 18, 19, 20, 21. 2 raised to the power 21 plus 0 plus 0 plus 0, 3 0, then 1 is plus 2 to the power 17 plus 0 plus 2 to the power 15 plus 2 to the power 14 plus 2 to the power 13 plus 0 plus this is 12, this is 11
plus 2 to the power 11 plus 2 to the power 10 plus 0, 9 plus 2 to the power 8 plus 0 plus 2 to the power 6 plus 0 plus 0 plus 0 plus 2 to the power 2 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 0. To the power 0. So these are the values, and these values if you solve, then it will be 2288967 of 10. So this is the decimal system. What is this? This is the decimal system. This is the decimal system. Now the real number, is x. This is minus 1 plus 0, x dash, this is x dash the value, into 3, 2 raised to the power 22 minus 1. 2 raised to the power 22 minus 1. And x dash is 2288967, this value. So by substituting this value, minus 0.10, 2288967 into 3 divided by, this is 2 raised to the power 22 minus 1. So it is 4194303. So this value is 0.637179. 637179. So what this value represent? This value represent, that is x is equal to 0.637179. This value is a fitness value. This value is a fitness value. Fitness value. Similarly, the other chromosomes will be creating as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. This value. And this value is minimum. This value is minimum as indicated by minus 1. And the other value is 1, 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 1. This is 1, and this value is maximum, which is 2. Maximum value is 2. So any vector is in between these two, vectors, that is minimum vector and maximum vector. And then there is a evaluation function. And this evaluation function has V1, V2, V3 with random, and this evaluation function is the vectors V1, V2 evaluation function is as
f of x is equal to x sine 100x plus 1. This is one evaluation function, and then we can find